हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ओके, so in today's class, we are going to start like kind of finishing the okay. Let's wait for a few minutes. So in today's class, we will be doing previous year questions. Okay, of triangles. If you have any doubts, you can ask. We'll surely try to clarify that. ठीक है? ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। Previous years questions. ओके, शुरू करें? गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हम लोग 2026 का जो इस साल का क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे और उसके साथ साथ जो दूसरे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है
उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप इससे पहले की वीडियोस नहीं भी देखे हो तो आपको मैं थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो। तो हमने पढ़ा था, देखो ट्रायंगल्स में बेसिकली 3 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस थोड़ा बाद में करते हैं, थोड़ा टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला होता है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स किसको कहते हैं या सिमिलर ट्रायंगल्स किसको कहते हैं, ठीक है, वो एक क्राइटेरिया। मतलब होता क्या है, सिमिलर फिगर्स होते क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कोई भी शेप सिमिलर कब कहते हैं, ठीक है। तो इसके 2 कंडीशन है जो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। पहला, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, ओके। और दूसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये 2 कंडीशन होता है, ये 2 कंडीशन होता है। एंगल्स इक्वल होना चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल रेशियो में होना चाहिए, ठीक है, इक्वल रेशियो में होना चाहिए। तो सर ये चीज तो आप बताएं, थ्योरेटिकली हम समझ में आ गया, या फिर हम पढ़ पा रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रोपोर्शनल, ये चीज हम पढ़ पा रहे हैं। बट एक्चुअली में कुछ हम क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे क्या, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आए आपको, ठीक है, या नहीं भी हो सकता कि नहीं भी आए। क्वेश्चन आएंगे कैसे कि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन हो गए, उसमें वर्ड्स दिए रहते हैं, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये सब चीजें हैं, उसमें कैसे आता है, उसमें तो ऐसे नहीं आएंगे, वर्ड्स तो नहीं दिए रहते हैं, उसमें तो ट्रायंगल्स लिखा रहता है, ठीक है, मैथमेटिकल वे में रहता है। उसको कैसे सॉल्व करें, उसका क्या मीनिंग होता है वो देखेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा चीज देखेंगे, उससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। इवन अगर आप ये वीडियो ट्रायंगल्स का पहला वीडियो देख रहे हो, फिर भी आपको ये चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है, कि 2 ट्रायंगल या 2 फिगर कब सिमिलर होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल हम बना लेते हैं, 2 ट्रायंगल हम बना लेते हैं। एक बना लेते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक है, और दूसरा बना लेते हैं ट्रायंगल PQR, ठीक है। जब हम इसको कहते हैं कि ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है, whenever we say triangle ABC is similar to triangle PQR, ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। मैं ट्रायंगल कर लिया हूं, कोई दूसरा भी फिगर हो सकता है, कोई दूसरा भी शेप हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन जो ये वाला है, इसको हम फर्स्ट कंडीशन बता दें, इसको अगर हम सेकेंड कंडीशन बोल दें, तो फर्स्ट कंडीशन कहता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा। क्या होगा, एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है एंगल क्यू का इक्वल होगा, और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल आर के इक्वल होगा। तो ये 3 चीज हम लोग बता पाते हैं पहले कंडीशन में कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। मतलब पहला लेटर से जो एंगल बनेगा वो दूसरे ट्रायंगल के जो पहला लेटर से एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा। वैसे ही सेकेंड लेटर से जो एंगल बनेगा एंगल बी, दूसरे ट्रायंगल का जो सेकेंड लेटर से एंगल बनेगा एंगल क्यू, वो भी आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद थर्ड लेटर से जो एंगल बनेगा एंगल सी, और दूसरे ट्रायंगल के भी जो थर्ड लेटर से एंगल बनेंगे एंगल आर, वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। समझ में आया,
समझ में आया? ठीक है, कहोगे हाँ सर ये समझ में आ गया। अब ये दूसरा कंडीशन क्या है मेरे भाई? कहोगे सर पहला तो समझा दिए बहुत अच्छे से, एक दूसरा भी समझा दीजिए। तो दूसरा कंडीशन भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा, अतः एकदम आसानी से समझेंगे। ठीक है, कि पहले ट्रायंगल के लेटर से साइड जो बनेंगे, अब साइड्स के लिए हम हमेशा 2 लेटर चाहिए होते हैं। वी ऑलवेज नीड minimum 2 letters to represent any side. Minimum what? It's always 2 letter only. Okay. So AB is a side. It's saying corresponding side should be proportional. Okay. What does it means? AB AB for side AB proportional, like corresponding side is what? First 2 letter of another triangle PQ. So AB by PQ. Okay, proportional मतलब PQ. So instead of writing proportionality ना, proportionality sign. Okay, proportional का मतलब क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। AB proportional to PQ, कुछ एक रेशियो है जिसके कारण वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो वही होता है प्रोपोर्शनल का मतलब कि उसका समथिंग, लाइक AB इज सम टाइम 5 times, 1 time, 2 time, 3 times PQ. That's what proportional means. It's in certain ratio, certain multiplication. Okay, यही होता है प्रोपोर्शनल का मतलब। विल बी इक्वल्स टू सेकेंड साइड। सेकेंड साइड क्या होगा? तो सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर को मिला करके, मतलब BC अपॉन QR विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को मिला करके, फर्स्ट और थर्ड लेटर को क्या मिलेगा? AC। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया, तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट और थर्ड लेटर ही लेंगे। तो अपॉन PR, थर्ड लेटर क्या है? PR। अगर आप डायग्राम में इस चीज को समझना चाहते हैं, डायग्राम में समझना चाहते हैं, तो आपके बगल में मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, बट बिना डायग्राम का भी आपको ये चीज जैसे ही दिखे, जैसे ही दिखे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, ये दो चीज आपको लिखने आना चाहिए। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, एंड AB अपॉन PQ should be equals to BC upon QR should be equals to AC upon PR। ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2026 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2026 का क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने आने वाला है। 2 मिनट का टाइम दीजिए। क्वेश्चन होगा कहाँ पर? क्वेश्चन होगा आपको तो साथ तो सुकून के पास होता है। फर्स्ट क्वेश्चन करें, फर्स्ट क्वेश्चन किया जाए? कहोगे यस सर किया जाए। तो इसमें आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है इस साल। कोलकाता ब्रांच, कोलकाता जो जोन है उसका क्वेश्चन पेपर CBSE का देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें से अगर देखोगे तो एक एक्चुअली BPT पूछा है 5 मार्क्स में। ठीक है, और दूसरा 2 मार्क्स का एक पूछा है। ठीक है, तो जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको अभी करा रहा हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, आप आसानी से देखकर बता दोगे। बोल रहा है कि ट्रायंगल AHK सिमिलर है, ट्रायंगल AHK सिमिलर है ट्रायंगल ABC का। अब इसको देखकर आप जो चीजें लिख सकते हो आप लिख लो, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कहोगे सर क्या सिर्फ इतना ही दिया हुआ है? नहीं, इसमें और भी चीजें दी हुई है, और क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। पायल आई है बहुत दिन बाद। हेलो सर, हाय पायल, कैसे हो आप? एक ही दिया हुआ है,
10 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर एंड HK दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा है आपसे कि AC कितना होगा, AC विल बी हाउ मच। हेलो सर, हाउ आर यू सर? हाय पायल, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? Okay, really sorry sir to not attend. It's not like don't attend, to not attend. Okay, to not attend your classes for long time, it's okay. I went to Nani's house. Cool, good. There should be some vacation time, na? So it's okay. So you can solve this question directly by just writing the criteria of similar figures. I am good, sir. Good. I miss your class, sir. इट्स ओके, अभी आ गए हो ना, अभी कर लेते हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। टुडे वी वर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो व्हेनेवर दे हैव गिवन यू समथिंग लाइक दिस, AHK triangle is similar to ABC triangle, then such cases, हेलो सर, हाय ईशिका, कैसे हो आप? ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा बताओ? अगर आपको थोड़ा सा ही पता है कि अगर सिमिलर ट्रैक दिया रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ? कहोगे सर, just now you told me that corresponding angles will be equal. Angle A will be equals to angle A, angle H will be equals to angle B, angle K will be equals to angle C. This is the first condition for angles. And then we have one more condition, that is for sides. What is that condition? Corresponding sides will be proportional or in equal ratio. So AH upon AB, AH upon AB will be equals to HK upon, we have taken last two letters, so here also last two letters, BC equals to first and last letter AK upon AC, AK upon AC. So now using this, can you answer AC value? Can anyone of you answer AC value? See, what are the things given? AK is where? Here. Next, BC is where? Here. HK is where? Here. AC is where? Here. So we can take these two things, okay, and we can find the value of AC easily. How are you, sir? Good. You? Okay. तो वैल्यूज पुट करते हैं। लेट्स पुट द वैल्यू। HK कितना है? हम लोग बस ये बोलेंगे, बहुत छोटा चीज मैंने आज पढ़ाया, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। तुम अगर फर्स्ट डे, आज तुम्हारा फर्स्ट डे होगा ना ट्रायंगल्स का, फिर भी तुम्हें चीजें समझ में आएगी कि सिमिलर फिगर किसको कहते हैं। तो दो कंडीशन, कितने कंडीशन? टू कंडीशंस तुम्हें याद रखने हैं। फर्स्ट, corresponding angles should be equal. Second, corresponding angles should be equal. Second, corresponding sides should be proportional. So corresponding angles should be equal means हम ट्रायंगल का एग्जांपल लिए, क्योंकि ट्रायंगल्स के बारे में ही पढ़ना है हमें। So triangle ABC similar to triangle PQR. So corresponding angle means angle A will be equals to P,
Angle B will be equals to angle Q. Angle C will be equals to angle R. Corresponding sides should be proportional. It means AB by PQ, BC by QR, AC by PR. ये चीज़ ही मैं बस पढ़ाया हूँ और उसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं. बस इतना पढ़ाया हूँ मैं. एंगल इक्वल साइड प्रोपोर्शनल. हमने लिया है फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको CBSE 2026 बोर्ड के पेपर से लिया गया है, उसके लिए हमने ये लिया है. अब इसमें एज कितना है? लेट्स टॉक अबाउट एज. एज है ही नहीं, हमें सिर्फ एच के बी सी ए के ए सी ये तीन चीज़ें हैं, चौथा निकालना है. सो एच के अपॉन बी सी विल बी इक्वल्स टू ए के अपॉन ए सी. ठीक है, ये कंडीशन यूज करना है. तो एच के कितना है? देखो 7, तो 7 अपॉन बी सी इज हाउ मच? 3.5 equals to AK is how much? 10 upon AC is how much? We don't know. X. ठीक है, X. अब इसको बस सॉल्व करना है. इसको क्या करना है? सॉल्व करना है. ठीक है, तो 3.5 अगर इसको हटाओगे तो 70. ठीक है, डेसिमल हटाने पे क्या होता है? 0 जाता है. डेसिमल हटाने पे 0. जैसे मान लो 2.5 है, इसका अगर आप डेसिमल रिमूव करते हो तो नीचे एक 0 आता है ना, 10 लिखते हैं हम लोग. ठीक है, वैसे ही अगर नीचे से डेसिमल रिमूव करते हो तो ऊपर 0 जाता है. नीचे से जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो न्यूमरेटर में 0 जाता है. ठीक है, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. ओके, सो 35, 72. Okay, now do the cross multiplication. 2x equals to 10, so x will be equals to 10 upon 2, so it's gonna be 5. So x, which is nothing but AC, is 5 centimeter. AC measurement is going to be 5 centimeter. Okay, okay, all right. So this is what numerical questions means, and this is the smallest question from which question of 2 marks comes in your exam. Okay, 2-mark question comes in your exam from this smallest topic. Like triangles are similar, so side angle will be equal, corresponding angle, and sides will be proportional from these two topics. And if you are able to do this, I'm not saying that I promise that you will get 2 marks, but for sure minimum 1 mark question comes in your board from this topic. Just these 2 lines, just these 2 lines will minimum 1 marks. Okay, and as in 2026 the question comes of 2 marks, so you can expect even 2 marks from one topic. Okay, total from triangles questions comes of 6 to 8 marks. Minimum 6 marks, maximum 7 marks, 8 marks, something like that they go. Okay, done na? If it's done, let me know. We will do second question in the second slide. If you have completed, just say done sir.
Done, sir. I take a screenshot. Good, good. Good. Okay. So we'll move next. And before doing next question, we will, like, we are revising the topic as well as we are doing the questions. Okay. So we are having three topics. One, similar figures, conditions that we have discussed. Another, BPT and converse of BPT. And the third is criteria for similarity. Okay. So second topic we are going to discuss, that is BPT. What does BPT means? Okay, so BPT simply stands for basic proportionality okay theorem. Basic proportionality theorem. Now the thing is, what does it means? We are doing just revision recap. You and I am assuming that you don't know anything about BPT, but you are going to solve the questions based on it. So how you are going to solve? It's interesting, right? Like, let's say you have followed all the things which you have learned so far in my lecture only. Like, I have completed almost every single bit of the triangle chapter in our lectures that we have done recently. So, and in previous year question also we are doing the third part, but I'm still revising them, but in a different way, like shorter to the shortest way we are doing revision. Okay, for the people who are struggling to pass, who have just joined for revision, or who have just joined for seeing like what all the topics are there in triangles. Okay, for all those kind of people, and for the people who have already understood the concept also, we are having questions, so you can focus on the question part. Okay, so basic proportionality theorem says, if we have a triangle, okay, if we have a triangle ABC in which there is a line D which is parallel to one side of a triangle. Let's say we have a line B which is parallel to BC. Okay, so if they have given you that D is parallel to BC, D is parallel to BC. If they have given you this, then then BPT says BPT says that these sides will be divided into equal ratio. Like, this line which was parallel to one side of a triangle will be dividing the other two side in equal ratio. It means AD upon DB is gonna be equals to AE upon EC. This is what BPT says. So whenever you see there is a line parallel to one side of a triangle, any part of a triangle, like any part of the triangle, it should be a line which should be a side of a triangle, and any side out of three, any one side, if it's a parallel, then it will be dividing the other two side in equal ratio, which means AD upon DB equals to AE upon EC. Now we are going to do one simple question based on this concept. That is also a question of 2026 paper only, and it's also of 2 marks. It's also of 2 marks. So shall we go? This is just the recap of BPT. And if someone asks me like, sir, what is converse of BPT? Then it's just reciprocal. If they've given the ratio of the sides, then you can tell about parallel of the that side, parallel of the line to the third side. It means if they've given you that a line is dividing two sides of a triangle in equal ratio, then that line will be parallel to the third side of the
triangle. Okay, clear? Or if you want, if like this is given, then this is BPT. Converse of BPT means this will be given, and then you can conclude this. So don't get confused. Max of the question comes from BPT. So understand BPT. You will surely understanding converse of BPT with just one click. So as of now, let's just focus on BPT. Okay. Okay. So let's do question number 2. This is also of 2026. They have given you a triangle PQR. They have given us a triangle PQR in which there is a line that is parallel to QR. There is a line that is parallel to QR, and that line is nothing but XY. Name of the line is also given. It's XY. Now the thing is, they have given you some condition, like not some condition. They've just given you XY is parallel to QR. The moment you see this, and you know that, sir, here we can apply BPT, then the same moment you should be able to write Px upon Xq will be equals to Py upon Yr. Px upon Xq is going to be equals to Py upon Yr. Okay. So here, okay. So what they ask in the what they have asked in the question, they have given you this thing, but they have given you some more thing also, like Px upon Xq value they have given you. Guess how much? How much they could have given? They have given you 7/3. How much? 7/3. And then they have given you one more thing, Py, which is 4.9, and they ask you Yr will be how much? Yr is going to be how much? Tell me. It's quite simple. It's not that hard. Okay. These are the previous year question paper. Previous year, 2026, like this year question paper in our Kolkata branch. Shall I share you this PDF? Do you want me to share the PDF? (2026) question paper. Okay, try this. So when you will be solving, you should be able to understand xy is parallel to qr. So px upon xq will be equals to py upon yr. Px upon xq will be equals to py upon yr. Yeah, here I have changed one thing, py value. Actually, they have given you pr, but I don't want to make you confused. In the coming question, you will be getting questions like that also. Okay. So here I have simplified it, like py instead of pr, I have given you py. Okay. So px by xq, sorry, is given 7/3. Py is 4.9. Yr will be how much? We don't know. So either you can write yr or you can assume it as x. Now what to do? This is the very tough part. After writing this, sir, I don't know what to do from here. Okay. So you don't have to worry. You just need to do cross multiplication. So 7 into x, it's going to be 7x equals to 3 into 4.9. It's going to be 3 into 4.9.
Now what you can do for your simplification, send this 7 to that side because it will come in division. Since it was in multiplication, so it's gonna be come in division. Now 7 and 4.9, actually it won't be cancelling directly. You have to remove decimal, so it will be getting 0. But in 7 table, it's come in 7 times. Okay. Okay, it might be confusing. Let me do it again. 3 into 4.9 upon 7. So if you divide 7 with 4.9, you will get 0.7. Okay, so x is gonna be 3 into 0.7. It's gonna be 2.1. Either you understand like this, or else you can remove the decimal and you have to simplify. Both way, it's same. Yes, sir. You won the question paper, right? Okay. Okay, done. This is done. BPT I'm not gonna do again. The reason is I have already taught that in the previous videos. You can go and check, and yeah, that I think will be sufficient. Okay. Okay. So we'll practice other questions. Okay, I will share the that what's called Telegram. I will share it in the Telegram group, that the question paper. Try to join over there. Okay. Okay. Now we'll move to the third question. We'll practice one more question, and then we'll close today's session. Okay. Question number 3. Try to do. This is also of 2026 basic paper. Those two were of a standard paper. This question is of basic paper. So they have given you like triangle ACP is similar to triangle DCP. Okay, this is given. Then they ask options like angle DCP will be 60. Second option, angle DCP will be 30. Third option, angle DCP will be 90. And fourth option, angle DPC is gonna be 30 degree. Okay. Now you will say, sir, how will I understand? Where is the angles? You should be giving some angle, right? Okay. So yeah, I'm gonna give you CP is a line, and let's say this is A, where this is 90 degree. Okay. They have mentioned, so I am also mentioning this is 60 degree. This is 90 degree. Okay. Now tell me which is correct. This is also of 2026. Shall I give the poll? Okay, let's do one poll question.
questions based on criteria for similarity has already been done, so you don't need to worry about that. You can go and watch previous year questions. We have already done two more parts over there. You can try that. This is question number 3. Tomorrow also we will be doing one. Not tomorrow. Tomorrow I have to take class of grade 11. Okay, day after tomorrow. This is question number 3. Option A, B, C, D. Yeah. Sir, there is a network problem. Okay, you can watch recording. It's all right. It happens. Because of rain. Okay. No problem. Option number B. People are answering option B. Okay. Let's see. In most of the options, they are talking about DCP. Where is DCP? Oh, this was D, right? DCP. This angle they are talking about. Okay. So if you see, triangle ACP is similar to triangle DCP. Which is ACP? ACP. Okay. So it means angle A will be equals to angle D. That's true. Both are 90 degree. Okay. Now ACP. ACP. Angle ACP is gonna be how much? This is 90. This is 60. So this is gonna be how much? 30 degree. 180 degree minus 90 plus 60. Angle sum property. So 180 minus 150. It's gonna be 30 degree. So this is 30 degree. Now from here, if you see, angle ACP is equals to angle DCP. So angle DCP. So this will also be 30. So if there is a 30 degree option, it's correct. Option B. One thing they've mentioned DPC. So of course, if this is 30, this is gonna be 60 degree. Okay, 90 plus 30, 120 plus 60, 180. So that's why this is not correct. These are also not correct. Only option B is correct. Option B. Yeah. Oh, my answer is correct. Good. Good. Those who have done it correctly, very good. You all are super intelligent. Super. Okay. Okay. So we will be concluding the class here. Okay. And yeah, I will just discuss the topic which we will be doing tomorrow. Not topic, like questions on which we will be practicing tomorrow. Criteria for similarity. Okay. Which we have discussed one by one. I'm just giving you a recap. There are 3 criteria. One is angle, or this is also called angle. Second is side, SSS.
and third is side angle side, SAS. So these are the three criteria. Try to learn about it. Okay, we will continue from here and we'll practice some more questions based on this. Okay, so yeah, thank you for joining. See you tomorrow. Take care. Bye bye. कैसे करते हैं ऐसे? हाँ. Good night. Take care. Okay, I'm ending the class. You too. Okay. Yes. चलो फिर. I'm ending the class. Okay. Bye. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. लाइक मोस्टली कल इस दूसरे सब्जेक्ट का क्लास होगा, पर मैथ्स का मंडे से फिर से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. थैंक यू. हाँ, गुड नाइट प्रतीक्षा, गुड नाइट पायल, बाकी सबको भी गुड नाइट.